देखो भाई एक्सटेम्परी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वी स्पोक अबाउट एफएमएस के अंदर होता है, टिस्ट के अंदर होता है, और हमने बात करी है इंदौर के अंदर एक्सटेम्परी हो रहा है। भाई पहली बात तो एक्सटेम्परी एक ऐसी चीज़ है, आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और कभी ऐसा बोलते हैं कि यू गॉट 2 मिनट्स ऑफ टाइम, उसके अंदर पहला 1 मिनट सोचने के लिए होता है और उसके बाद 1 मिनट बोलने के लिए होता है। निहारिका क्विकली यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट एक्सटेम्परी, मैं आपको राइट दे रहा हूँ स्पीक करने के लिए। निहारिका बोलोगे? हाँ भाई निहारिका बोलेगी हाँ या ना, जल्दी बोल, शर्मा मत यार, श्योर, ये हुई ना बात, अभी शर्माया मत करो। निहारिका आई एम गिविंग यू राइट टू अनम्यूट, आई एम अनम्यूटिंग यू राइट नाउ एंड अच्छा 1 सेकेंड, ठीक है, डन है। साइड में आ जाओ, कहीं खोपचे में आ जाओ और टीवी टूवी बंद करके सबको अपना एक्सपीरियंस बताओ। देखो भाई एक्सटेम्परी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वी स्पोक अबाउट एफएमएस के अंदर होता है, टिस्ट के अंदर होता है, और हमने बात करी है इंदौर के अंदर एक्सटेम्परी हो रहा है, और आईएफटी के अंदर एक्सटेम्परी हो रहा है, आईएमआई के अंदर एक्सटेम्परी हो रहा है, निरमा के अंदर एक्सटेम्परी हो रहा है, एसआईबीएम के अंदर एक्सटेम्परी हो रहा है, रोहतक के अंदर एक्सटेम्परी हो रहा है, समझ लो, तो एक्सटेम्परी भर भर के हो रहा है, एसआईबीएम के अंदर एक्सटेम्परी हो रहा है, ठीक है भाई, बहुत बड़े SPJain के अंदर। तो एक्सटेम्परी क्या है, आपको टाइम दिया जाता है, और आईएमआई, हाँ आईएमआई मैंने सुना है लास्ट ईयर के लिए हुआ था, अभी लेटेस्ट पता नहीं है। भाई पहली बात तो एक्सटेम्परी एक ऐसी चीज़ है, आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और कभी ऐसा बोलते हैं कि यू गॉट 2 मिनट्स ऑफ टाइम, उसके अंदर पहला 1 मिनट सोचने के लिए होता है और उसके बाद 1 मिनट बोलने के लिए होता है। और एक्सटेम्परी टॉपिक्स कैन बी, आई स्पीक इंटायर आज का सेशन एक्सटेम्परी भी करेंगे, 15-20 मिनट्स लगाएंगे, क्या होता है कैसे होता है, एंड देन विल ऑल्सो गिव राइट्स टू निहारिका। निहारिका भी बस निहारिका को मैं एक्सेस देने वाला हूँ, अनम्यूट करने वाला हूँ, एंड देन निहारिका आई हैव अनम्यूटेड यू एट योर ओन विल, या यू आर अनम्यूटेड निहारिका। Hello, sir. Hi, everyone. Yeah, So, Niharika, shoot. sir, Niharika, which extemporary experience you talking about? I'm Indore. I had my interview yesterday. Brilliant. Please share what extemporary happened that IIM Indore. So, actually, my topic was relatively easy. The topic was, is social media really driving us farther away? Say it So, again. they gave, is social media driving us farther away Oh, from lovely, each other? lovely. Okay, what do you guys think in the chat? Is social media driving your father away? Yes or no? I would say yes. I would say that. Some people think definitely yes. मेरा पिताजी, ओके मैं व्हाट्सएप को भी सोशल मीडिया में काउंट कर रहा हूँ बाय द वे, ठीक है, व्हाट्सएप फेसबुक को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। हाँ भाई, इज व्हाट्सएप ड्राइविंग योर फादर द वे? यस और नो? यस और नो? ओके ओके, ये फादर है क्या? ओ मुझे लगा फादर है, अच्छा अच्छा, ओ ठीक है, सॉरी। हाँ बट लेट मी जस्ट चेंज इट फॉर यू। एक्सटेम्परी, एफएमएस के अंदर एक्सटेम्परी आ सकता है कि भाई करण अर्जुन, लड़के का नाम है करण, उसको टॉपिक आया करण अर्जुन, ठीक है, तो अगर ऐसा टॉपिक अगर आपको आ सकता है एफएमएस के अंदर, ये भी आ सकता है। I'll ask you, I'm going to listen back to you. हाँ भैया, is social media driving your father away? हाँ भैया, my father definitely yes. He spends average watch time on his phone is nearly 5 hours every day. हाँ भैया, yes or no? Yes or no? अब बताओ चैट के अंदर। हाँ भैया, मैं फादर की बात कर रहा हूँ यार, मैं फादर की बात कर, तुम फिर हाँ भाई अब बताओ yes or no? ओके, यस नो, मतलब आपके पापा यूज ही नहीं करते, चलो ठीक है। मे बी क्या होता है? अबे आंसर करो भाई, मे बी क्या होता है? ऑलवेज हैव एन ओपिनियन, कम वॉट में, यस 4.5 आवर्स, ग्रेट। अब अपने पापा का जरा चेक करिएगा आज रात को सोने के पहले स्क्रीन टाइम, आपको पता चलेगा यस डेफिनेटली। चलिए ठीक है, यहाँ पे टॉपिक है निहारिका, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, कमिंग बैक, इज सोशल मीडिया? No problem, sir. So, yeah, is it driving us farther away? So, they gave me 30 seconds to think, and then I had to speak for a minute. I politely asked them if it's okay if I jot down the points. They were comfortable with that. So, I spoke, in favor that yes, it is driving us farther away. I gave an example of all the different social media platforms that we're uploading stories. We're sending out snaps to each other, but even like in a lot of situations, it happens that you'll probably be sitting together in a room and you'll find all those 4 different people on their phones. They're not really connected to each other. We're not really talking, but we're just doing things for the sake of social media to put out that very nice Instagram post. So, and there were a lot of, things along the similar lines that I elaborated on. Okay. So I would say it was relatively on the easier side that I got this topic. Super. What are the other things happening at IIM Indore? Your friends on the WhatsApp group, CATKing family के क्या बच्चे share कर रहे हैं? What's on your mind right now? What do you want to share? Did you read something else? Is that to me? Yeah. Anything else? Did you hear? What are the topics coming? No, this wasn't a critical thinking. For IIM Indore, they were also talking about if you're a team leader, would you divide and you have a particular reward? So you know that 2 of the team members haven't contributed equally. Would you still divide the reward equally amongst all of the people or not? Then I'm not able to recall a lot of them for Indore though. Okay, that's fine. Anything else?
Role of Germany in UK Ukraine crisis. Okay, great. Tanishk is saying that. Anyone else want to contribute? ठीक है, बहुत ही amazing. Thank you. Lovely, thanks man, thanks. अच्छा एक और काम बता दे, निहारिका भी तो आई है तो यार ये तो हो गया एक्सटेम्पर. गोइंग ऑफ टॉपिक, अपना IIM इंदौर का एक्सपीरियंस बताना चाहिए फटाफट शॉर्ट में. Sure. ठीक है. So I had two panelists. One of them, they just started off with. अच्छा निहारिका, some feedback, as a Sure. friend, as a guide. बहुत तेज बोलती है यार, तू थोड़ा धीरे बोल भाई. Have you got this feedback before? Yeah. Like I speak too fast, but no, I'll. या इंटरव्यू में तो थोड़ा सा ध्यान से. हाँ ठीक है, चलिए बताइए IIM इंदौर इंटरव्यू एक्सपीरियंस. हाँ जी. So I had two panelists. One of them, he just started off with my job role and why I had resigned. I resigned back in September. So just that gap. Then there were some follow-up questions on my work ex and related what were my roles and responsibilities. They asked me about why I was working in marketing. So they asked me about the switch. I had the HRM call, why I wanted to do that. Then they asked me about some motivational theories. They asked me, do you know about motivation? And they wanted me to name a few theories. Then something surprising to me was they asked me to draw a demand curve. Then there were some questions around that. Mm-hmm. That was primarily it from the first panelist. Then there was another gentleman. He asked me about straight up, like for him it was a very just a quick Q&A kind of a experience that I had. He asked me the founders of Apple, Google, Infosys, HCL, founders of Tata, like just one after the other. And so in a lot of them, there were groups of people. It wasn't just a single founder. Yeah. So I didn't know the entire, all the people involved. So he kind of pushed on that. Okay, do you know this? Do you know that? Then, he kind of continued on the same line of questioning. Mm-hmm. And then that ended with the extempore. Super. सही है यार, बहुत बढ़िया. कितने मिनट था टोटली? All of this was under 15. Okay. बहुत ही अमेजिंग. ठीक है यार, that's lovely. अच्छा एक और बात बता दे यार फटाफट निहारिका. Yeah, you spoke about that as well. 10 to 15 minutes only. Overall, the theme was easy. Theme was like smooth. It was. It wasn't a pressure interview. Both of them, they made me very comfortable, and especially for the founders line of questioning. If I didn't know anything, he asked me very, very normally. Okay, like he tried to give me hints. Okay, do you know this? Do you know that? There were too many like other people also along those lines. It wasn't a stress interview. Super. And what's your background, by the way? People are curious. Yeah, so I've come from a BBA background. I have with 39 months of work ex. Then my CADs are 8, and 9. CAT score is 94.41. Super. IIM Indore general 94 पे. जी. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. ठीक है भाई. Thanks for sharing that. Bye. Take care. Thanks. और बॉयज एंड गर्ल्स, that was निहारिका भाई. एक फीडबैक ऐसे आता है तो गर्म हो जाती चीज़ें. बट देखो यार, आपका इंटरव्यू ऐसे जा सकता है. कई बार अब तुम बोलोगे यार मेरा तो इंटरव्यू ऐसा कभी गया ही नहीं आज तक. ऐसा इतना स्मूथ गया और इजीली क्वेश्चन पूछे और मतलब एप्पल के CEO पूछ रहे हैं, गूगल के CEO पूछ रहे हैं. हाँ, HCL का CEO लोगों को पता नहीं होगा. बाय द वे, एनीवन नोस HCL का CEO? एनीवन नोस HCL का CEO? शिव नादर. गुड जॉब. बहुत प्यारा इंसान है शिव नादर, बहुत ही प्यारा इंसान है. ठीक है. एनीविच वेज, रोशनी नादर नहीं, शिव नादर. ठीक है. और टाटा के CEO तो आपको पता ही होंगे. एनीविच वेज, तो भाई बहुत अमेजिंग है. तो सुनते रहो और पढ़ते रहो, आपको मज़ा आएगा. ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ें.